Hello, everybody. This is Habib. Welcome back to Popcord. In our last episode, episode number 31, career planning and how arts is kind of an overlooked field within Pakistan. Careers की तो हमने बात कर ली. This episode is a bit related to that, but not entirely. Careers से पहले जो होता है, when you're at a university or college और आप सीख रहे हैं, कि आपको अच्छी तरह सिखाया जा रहा है कि आपकी your environment and your school teachers, are they properly equipping you to be ready for the real world? Are they using efficient teaching techniques to get you ready for the real world? So इस episode में मैंने 3 लोगों को बुलाया. There's 3 guests in this one. The first is Amaaz. He has been on the podcast a few times before. The second guest is Laiba. She's 22 years old from Lahore. And the third guest is Marium. She's 19 years old from Karachi. Amaaz has already graduated. He studied abroad. He studied in Scotland and then he came back to Pakistan to live in Islamabad and now he works there. So his insights are a little bit different from Laiba's and Mariam's. Here's a little bit of introductions of our 3 guests. So first, Amaaz. Guys, my name is Amaaz and I'm 23. I'm currently in Islamabad. I studied in Scotland for like 4 years. BS मैंने अपना किया वहाँ से management में. And now I'm back in Islamabad. And I'm currently in a think tank. काम कर रहे हैं. My dream was to actually serve Pakistan in a way, and alhamdulillah through think tank and action draft policies and stuff, जो हमारी government में जाके discuss होंगे इंशाल्लाह, and उन पे फिर action लिया जाएगा. Yeah. I guess one thing is like I love pets. I have like 2 cats and my Billy ने भी बच्चे दिए, and I have 2 dogs. I have cute. 35 plus pigeons. I think 10 plus parrots. 35 plus pigeons. अच्छा ये इतना तो मुझे भी नहीं पता था. 35 plus. Oh my god. मतलब पूरे मोहल्ले के pigeons हमारे हैं. I think we're the only ones who actually keep pigeons. Not a lot of people keep them here. बाबा का शौक है बचपन से. You have to make a lot of mess. Yeah, हलो साफ करना पड़ता है. वो ये है. हर जगह उनकी बिट्ठी होती है. Yeah, there's a lot of mess. What is wit called in Urdu? Yeah, bit कहते हैं. बिट्ठी कहते हैं. अच्छा. Bit हाँ. Okay. That's cool, man. You're a big animal. I mean, you're making me think of like that pigeon lady from Home Alone. Oh yeah. Crazy pigeon lady. Crazy pigeon lady. So, I love Home Alone too. Christmas. Yeah, something. Very nice. And here is Mariam. Hello guys, my name is Marium. I'm 19. I'm a student of Bachelor's in Psychology. I'm living in Pakistan, Karachi, and I was born in Karachi. And here's Laiba. From Lahore. I am 22, going to be 23 soon, and I've completed my BS in English Literature. I'm thinking to switch my subjects for MPhil. फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना सब्जेक्ट बदल लूँ. उसके लिए मैं अभी फिलहाल एक स्कूल में आई स्टार्टेड टीचिंग ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं ये टॉर्चर बर्दाश्त कर सकती हूँ कि नहीं अपनी पूरी लाइफ के लिए. Okay, so now we start the episode. This episode starts with some content around rote learning, aka ratta-based learning. Ratta-based learning matlab memorization of stuff. So for example, multiplication tables हमने याद करने होते हैं from a very early age. कुरान का हिफ्ज़ करना, that's a big part of our culture. Exams are often structured in a way to test your memory. क्या आपने किताब पढ़ी थी, क्या आपने मेमोराइज किया कंटेंट के नहीं. तो एग्जाम्स हमारे काफ़ी देसी कल्चर में ऐसे ही स्ट्रक्चर किए जाते हैं जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में भी किए जाते हैं फॉर सर्टन मेजर्स. फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द मेडिकल फील्ड you'll be memorizing a lot of stuff versus if you're in computer science over here in the West, you'll probably be tested more on your practical skills instead of your memorization skills. Essentially, rote-based learning is a bigger part of not just Pakistani culture but I would say Asian culture overall. तो अमाज ने इस बात को थोड़ा वजन दिया based on his experience studying in Scotland and he starts the episode out in this fashion. So let's go ahead and get started. वैसे रेड मैंने एक चीज पूछनी थी. अब हम दोनों ने फॉरेन मतलब कि मान ले तो लोकल है. यूके में ये होने का फायदा था कि we had like a lot of diverse teachers. We had teachers from Greece, we had teachers from Germany, Yeah. from Spain. मतलब इस तरह की मतलब बहुत ही vast diverse हमारे पास teachers आते थे from all over. For German teachers, he obviously तुम्हें पता है Germany का जो education standard है, it's really high and even मुझे एक मेरे colleague थे वो पेशावर से थे. He told me कि जो कहते हैं यूके का सिस्टम अगर देखा जाए एजुकेशन स्टैंडर्ड कहते इतना हाई नहीं है एज कम्पेयर टू जर्मनी. भाई क्या. एंड ही वाज डूइंग अ पीएचडी. तो वो यार दैट जर्मन टीचर इन आवर एग्जाम, सो वी हैड लाइक इंटरनेशनल बिजनेस की ऐसे क्लास थी.
तो उसके एग्जाम में that guy told us कि मैं आपके memory test नहीं लेने आया हूँ, मैं आपकी critical thinking test करने आया हूँ. And he tells us you can have a piece of A4 size paper, Right. जो लिखते हैं उस पे लिखो. We will not check. We will not, हम बस देखेंगे कि पूरे 1400 words उसने लिमिट रखी थी. कहते हैं you can't print, you can only handwrite. मतलब हाथ से लिखो, एक हैंड रिटन एक शीट आएगी. कहते हैं 1400 words और कहते हैं हमने कैलकुलेट किया you can't fit more than 1400 words anyways on the A4 size sheet. आपकी जितनी भी छोटी हैंड राइटिंग हो. तो कहता है कि write anything you want and any theories वगैरह, because we won't be testing your memory. We'll test your critical thinking skills. And जब एग्जाम आया, believe me, मैं सिर्फ उस शीट को 2 बार देखा होगा. बाकी सारे concepts जो थे I knew more or less. And वो critical thinking थी, like you said. And they wanted that. They wanted to test how well you understand the concept, not regurgitate what you know. And I felt like कि यार ये standard अगर हम use करें मतलब anywhere, that's how you promote critical thinking skills. And उसके बाद से I felt like such a deficit. यार पाकिस्तान में हम किस तरह फिर अपने बच्चों को आगे लेके जाएंगे if you don't promote the critical thinking skills. Right. No, absolutely true. I completely agree. यहाँ पे there's not that much dependency on ratta based learning, rote learning basically. जो कई बार like and it's not just Pakistan actually. I think Asia in general has this concept of just repeat until you memorize a concept. Not so much to think outside the box. But you see what just say, I don't know exactly who said this. Somebody said this. After this episode was recorded, I had the chance to research who actually said this quote, and it turned out to be Steve Wozniak, the co-founder of Apple. And what he said about India, essentially the culture of India is one of success based upon academic excellence, studying, learning, practicing, and having a good job and a great life. He says essentially the formula is study, work hard, and you get an MBA, and you'll have a Mercedes. But where is the creativity? The creativity gets left out when your behavior is too predictable and structured. Everyone is similar. Look at a small country like New Zealand. The writers, singers, athletes, it's a whole different world. And essentially, I had time to process this, that Steve is right. India's culture is also very similar to Pakistan's in that sense. The creativity gets left out when we are systematically teaching our kids the methods that implement memorization instead of practical, critical thinking, meaning actually thinking about, maine seekha kya hai? Why do we learn this? Why do we do things this way? Asking questions are kind of prohibited in our culture oftentimes. So back to the episode. Indians, for example, are extremely intelligent, but Indians will never be good like creators. They will not invent something. They will not innovate because they can't change their mind from systematic to innovative. Unki intelligence itni achhi hai. Like they're so, and I experience this day to day at work, yaar. मैं जॉब पे काम करता हूँ, मैं इंडियंस के साथ बहुत काम करता हूँ. They're so intelligent. उनकी मैथ spot on, their coding skills are. लेकिन अगर मैं उनको step by step ना बताऊँ ना कि क्या करना है, वो नहीं कर सकते. Like I just tell this guy, I have a coworker, तो मैं उसको बोलूँगा यार ये मुझे ला दो. He'll be like, I'm not sure what you want. But if I tell him step by step, like literally, hey, go to this, open this, press file, save as, whatever. Oh my God. Run this code. Then he'll be like, oh yeah, absolutely, I'm on it. Lekin wo outside the box thinking jo hai na, wo, I think it's just two different types of brains. These are the same people who are so intelligent that they can memorize pi, the number pi to like 15,000 digits. So हजार tak har agle bachche ne sikha hota hai. Lekin can they apply it, in a real world problem? Can they apply their intelligence to? So I guess that's what it comes down to. There's a difference between intelligence and street smartness, application smartness. What have you? This is so true. I remember like जो कैलकुलेटर में हमें पाई की वैल्यू दी जाती है ना, मुझे याद है 3.1415926 मुझे याद है. हाँ, इधर तक मुझे भी याद है. Yeah. That's exactly the last number I know. But I'm definitely more in favor of like real world practical knowledge. Although मेरी coding काफी अच्छी है. I code pretty well. मेरी math काफी अच्छी है. I'm not as intelligent as somebody who has a systematic type of brain. But then I think about it, yaar, should I use common sense or should I, go that route? Then I'm like, maybe common sense is all right. And maybe that's better.
Yeah. Yeah, that's something I really appreciate about Western learning. They like not every teacher here, not every university will train you like that, but Mhm. generally the concept is they try to make you leaders. They try to make you leaders of your own thought, leaders of design, leaders of creativity. Individualism, हाँ exactly, Hmm. individualism ये लोग promote करते हैं, and उनके culture में भी अगर देखा जाए, it's very much ingrained. You're given the Yeah, tools and you have to work it yourself. If you're not, you're basically not yeah, part of the system. Huh? right. Yeah, you have to perform. There's no other way. और ऊपर से एक था ना American एक वो understanding भी है कि if you work you can get anything. मतलब कि it's Absolutely. that a very positivist kind of thinking. तो यहाँ पे मैं रुक के थोड़े से एग्जांपल्स देना चाहूँगा of why I think Steve Wozniak had a great point about the lack of creativity in Indian culture and by extension to Pakistani culture as well, due to our teaching methods. In the US, we have a national spelling bee where we bring together kids every single year and we have them compete through spelling competitions. Every year, a lot of Indian kids actually come really far, and many of them have won in this tournament. This year was amazing because this year we had 8 winners. They ran out of words. They ran out of words to give to the kids because all 8 of them were doing so well and they kept answering correctly. And they had an 8-way tie and they gave all 8 of these kids the first place prize. Out of those 8 kids, 7 of them were Indian. It just goes to show you how great the emphasis on memorization and systematic learning is in our culture. Oh, by the way, ये Indian बच्चे हैं लेकिन पाकिस्तानी बच्चे भी हो सकते थे. I think the reason there's not a lot of Pakistani kids in in the spelling bee is number one, the smaller population that we have here, and number two, अगर कोई बच्चा अच्छी memorization दिखा भी देता है, their parents often think that hifz is a better route than learning spelling of different words. So our culture puts greater priority on hifz. That's a greater use of our kids' time. That's just my hypothesis. The second example I have is recently I went to see this new Salman Khan Bollywood movie called Bharat, and it was a decent watch. I went to see it with my family in the theater. I enjoyed it. I came back out and I researched the movie a little bit, and I found out that it is actually a copy of a Korean movie called Ode to My Father. And that movie was made in 2014. I was interested, so I looked up the trailer of that movie on YouTube and I found that the scenes were copied exactly. A lot of the scenes were copied exactly from Ode to My Father to Bharat. This is not the first movie that India has taken from Korea, either through inspiration or complete duplication of their stories or whatnot. This is actually at least the 15th movie that has been copied from Korea, among, of course, some various Hollywood movies that have been copied as well by Bollywood. And there's not necessarily anything wrong with that. Bharat actually had the license permission of the original movie creators to implement this in Bollywood. But the question is, why? आप क्यों कॉपी करेंगे? South Korea की population है 51 million. India की population 1.3 billion people. Pakistan की population है 197 million. So our countries have great populations, yet the output of creative content, which includes literature, movies, arts, is not proportional to our population. That kind of strikes me as intriguing and a little sad at the same time. South Korea, again, very small country, 51 million people. They are so well known among fields like cosmetology, makeup, gaming culture, innovative tech companies like Samsung and LG, K-pop, of course. वो तो पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत सुना जाता है. Korean dramas are extremely famous. People go to dramafever.com, very famous. Korean movies, of course, they're being copied all over the place by Bollywood. So, with a population of just 51 million, South Korea has made such an impact on the world. And that's amazing. That's amazing. The creativity that comes out of that country is just exceptional. So, what's missing? I really don't know the answer myself, to be honest. I just think that's something for us to think about as a country as a whole for Pakistanis on how we can get ahead and how we can put out more content that we can be proud of, more original content that we can be proud of. So that ends my little side thought / rant on this topic. I'll go back to the episode now. This was going to tie into my next question because this actually, the knowledge that they give you here and the aid that they give you in colleges over here, like for example, they helped me build my resume, my university. They helped me send my resume to companies for internships. Oh, okay. और उस जरिए मुझे काफ़ी internships भी मेरी job वगैरह. Do we have that same level of support in the Pakistan education system? This is an honest question for me because I don't know the answer. तो मतलब आप लोगों को equip किया जाता है उस you just graduated, you're graduated but you graduated from abroad. But what I want to know is like, do you feel equipped to be able to get jobs in Pakistan's economy based on whatever support you got in the Pakistan educational system? Yeah, personally, जो हमें यूनिवर्सिटी में हमें सिखाया था, हमें एक तो हमें CV बिल्डिंग एंड वही पर्सनल बिल्डिंग,
like पर्सनल डेवलपमेंट उस पर काफ़ी फोकस हुआ था हमारा, but not on like कौन सी जॉब पे अप्लाई करना है. They were just like choose whatever you like. मतलब कि even from our thesis they said whatever you want to do a thesis on, it's completely free. मतलब कि exactly जैसे research था ना जो हम पढ़े थे वो सारा, तो it's like they give you complete freedom. But अगर आप if you don't chisel it down, if you don't specify it enough, वो आपके लिए मसला हो जाता है. I think it's the same for job. कि भाई वो कहते हैं आपने जॉनसन इंडस्ट्री में अप्लाई करना है, you're free to do so because everything you learn on the job basically. And Yeah. especially for my kind of degree or management degree, आप कुछ भी theory पढ़ लो, reality different होगी हमेशा. So in that sense, or in specific to your Pakistani economy as well, यार अभी एक recently strike हुई थी PhD doctors की, and I think there were 120 PhDs in Pakistan who are still struggling to find a job. And उससे फिर अंदाजा होता है कि यार what are we actually teaching our PhD students? भाई आप are you even capable or like जो हम उनको skills सिखा रहे हैं Yeah. वो जॉब वही डिमांड कर रही है या क्या? खैर वो फिर वो Right. पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है ना एजुकेशन सिस्टम पे, बट इट्स लाइक Mm. मोर ऑफ एन ओवरआर्चिंग. मतलब अगर आप बाहर से पीएचडी करते हो फॉर एग्जांपल कहीं Yeah. भी कॉलेज से करते हो, ट्रिनिटी कॉलेज या Absolutely. हार्वर्ड से, भाई आप तो फौरन खटाखट जॉब Yeah. मिले. इस बात पे यही पॉइंट हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि हमें बताया ही नहीं जाता कि आपकी वैल्यू क्या है और आप क्या बोलते हैं किस किस्म की आपकी जॉब में जाना चाहिए या नहीं. तो हमें वो नहीं सिखाया जाता कि what type of job should you be applying for, what is your work, how much your pay is according to your studies, how much your pay would be, or how to pay your taxes, how to climb a tree, or whether if you're like stuck in a forest, so how to build a campfire. You aren't taught all of that stuff unless you personally Google it or मतलब आप अपने दोस्तों से फाइंड आउट कर पाते हो भाई अच्छा ये सब होता है इस तरह से होता है. You don't know how to properly fill a form or any documentation. You aren't taught about that. आपको वो दूसरों लोगों के एक्सपीरियंसेस से पता चल जाता है. आप उनसे पूछ पूछ के जाते हो. वो आपको नहीं सिखाया जाता. That is just like one of the very biggest flaws I personally believe there is in our Yeah. education system. So at this time, we shifted over the conversation to teachers, and Mariam started talking about how important teachers are to the entire learning process and how they're possibly being held back from being successful at their jobs. When you're studying in a school or a high school or even in a university, it's like a 50-50 relationship between the teacher and the student. The 50% is the teacher share who actually makes the child or the student understand whatever she's teaching, and she should try her best in order to teach the whole class, even if it's like 40 students. Also, like I want to talk about that as well. Like 40 students is too much burden on a teacher. That should be like limited to 20, 25 students. That's like more than enough. I mean, what are they trying to make the teachers do? Have a heart attack or a hemorrhage with the tension of 40 students? Because Yeah. उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये भी होती है कि अगर समझ लें कि 39 स्टूडेंट्स में से अगर 40 स्टूडेंट्स में से अगर 39 स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं और अगर एक नहीं पढ़ पा रहा है, द टीचर शुडंट बी नेग्लेक्टिंग दैट चाइल्ड. उसके अंदर ठीक है वो नहीं समझ पा रहा होगा, आप उसको भी अपने साथ आपको लेके चलना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली टीचर की भी वो फेलियर मानी जानी चाहिए एंड टीचर शुड बी एक्सेप्टिंग हर फेलियर. और उस एक बच्चे को भी उनको समझाना चाहिए कि भाई ये सब होता है, इस तरह से होता है. I mean that happened with me because that's why I could relate to this. Being an account student, being a commerce student, मैं जब accounting कर रही थी तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी टीचर बार बार अकाउंट्स की चेंज हो रही, कभी मेल थी कभी फीमेल थी. अब उनका स्टाइल पढ़ाने का अलग अलग, कोई बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा है, कोई बहुत स्लो स्पीड से जा रहा है, कोई मीडियम स्पीड से जा रहा है. Yeah. And
सिर्फ मैं नहीं थी बल्कि I remember particularly there were like 5 students of us. There was a group of 5 students, and we couldn't understand a single thing that she was trying to say. वो एक टीचर का मुझे particularly याद है, वो बहुत स्पीड में जाती थी. अब हमारे जो टॉप ग्रेड स्टूडेंट्स थे वो उनके साथ चले जाते थे, हम 5 पीछे बैठे हुए होते थे. तो we used to like हम लोग को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी इन अकाउंटिंग. Yeah, the ratio especially यहाँ पे तो laws होते हैं. I don't know if Pakistan they have a law that a school should maintain a certain ratio for teacher to student. Okay, For if real? it goes over a certain ratio, then they have to hire more teachers. That's usually the indicator. पर सही Yeah. बात है, they manage नहीं कर सकते कई बार. अच्छा I wasn't aware of that. इधर तो नहीं, हमारा तो प्राइवेट स्कूल में बस इस तरह ही होता था कि we had separate teachers for each subject. मतलब कि अब I'm not sure कि US में क्या सीन है, लेकिन ऐसा ही होता है कि भाई for example अगर हमारी क्लास है तो मैथ्स की टीचर आती थी, पढ़ाती थी, दूसरी क्लास जाती थी, फिर तीसरी क्लास जाती थी, चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी. That's more than 40 students ना. That's more than like मुझे याद है हमारी जो IG2 होती थी, IGCSE जो मैंने पढ़ा था रूट से, we had around 40 to 50 students in one class. Okay, and there were like 40 guys and 10 girls. इस तरह सीन होता था. And that's just one class, and one teacher is going to teach 50 students, and then to the next one which is 30 students, and then the next one which has like 40 students. So you can imagine the amount of like stress that's put on a teacher, because you can't focus on a single student. No? आपका वो पूरा मॉडल ही फिर तहस नहस हो गया. Right. Yeah, absolutely. I think that's why we often forget that teachers are human beings too, right? और काफी Exactly. उनमें से फिर give up कर देते हैं. At a certain point, they stop caring. That's the reality. I'm pretty sure. That's true. That's how it is. Lekin yeah, I was actually fortunate enough to have like a few really good teachers that actually helped me. And उन्होंने मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी एक sociology की जो मेरी teacher थी, and also my psychology teacher as well, so they really helped me push myself ahead. मतलब कि I was kind of shy. I used to be very introverted. Lekin my sociology teacher, like I was the only guy in my sociology class. Okay, and for an introverted kid, that's that's unacceptable. लेकिन उन्होंने कहा कि तुम प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है, तुमने सबको समझाना है कि ये इसकी डरहम की क्या हुआ है. I was like I think 16 or 17, and she told me कि presentation. I had never given a presentation before, and she forced me कि नहीं तुम presentation दोगे, पूरी class के सामने दोगे. And she booked a separate room for us in the school. वहाँ पे फिर हम projectors पे सबने एक-एक करके presentations दी. So that gave me such a confidence boost ना. And she even told us, कहती थी तुम इधर ही रहते हो तो बस आ जाया करो पढ़ने के लिए. And I used to visit her like twice or thrice a week. मुझे ये समझ नहीं आया, प्लीज मुझे ये समझा दो. तो इस तरह की टीचर्स जो होते हैं ना, they really like जो एफर्ट करते हैं, and they really invest time in you so you can grow. इस तरह के टीचर्स as you know बहुत कम होते हैं. लेकिन once you get those, बस hold on to them. I would recommend. कई बार ऐसा भी होता है कि there's a struggle between the school board, the government, and the teachers in terms of their salary. और यहाँ पे at a few times the teachers have gone on strikes because they're not getting paid enough. यहाँ पे वाकई teachers have like lower than average salaries, right? And they're getting paid by the government, and the government system isn't the best even in the US here. So होता क्या है कि like teachers are often made to go through this guild system where when they all agree to go on strike, right? हम स्कूल पे नहीं आएंगे पढ़ाने बच्चों को, and they don't show up for let's say a week or so. वो students को obviously कोई पढ़ाने के लिए कोई है नहीं. They try to find substitute teachers and stuff, and sometimes they're not able to. The school closes down. और फिर they try to guilt the teachers into it, like आप बच्चों की परवाह नहीं करते, and then they go to the parents. They're like, the teachers just don't care. Guilt tripping. Exactly. They put them through a guilt trip instead of just saying, yeah, we're just gonna pay you guys more money. So eventually कोई deal हो जाती है, लेकिन guilt tripping is a major tactic used here in politics. That's bad, man. I remember reading a few articles which said that the teachers in America, especially in America, they actually invest their own money on the kids. Yeah. ये होता कि वो बेहतर हो. मैं कहा यार, that's dedication. And if बहुत common. I felt मैं कहा यार, America, like people say it's the greatest country. It's not just in America. It's not just America. Yeah, it might not just be America. Teachers जो खास तौर पे teachers across the world, I can imagine the ones that care about their job, क्योंकि कहीं passion, कहीं लोग passionate भी होते हैं. यार, I want to help kids out. Exactly, हाँ.
उनको क्या फ़र्क पड़े बच्चे के लिए पेंसिल खरीद दी, किताब खरीद दी, किसी की हेल्प आउट कर रहे हो. अब ऑब्वियसली उनकी सैलरी लो है. It's not like they can afford to do that for every single kid, but teachers do. Some teachers I've seen personally, they go out of the way to like fulfill our needs. And I've had like teachers buy me pens and pencils. And sometimes I felt bad. It's not like we couldn't afford it. It's just, maybe I got lazy or something, but she or he still did that for me. मगर तब बच्चे होते थे 11-12 साल के कि आप, I had no idea how much money they make, and I never even crossed my mind. Now you think about it and you start feeling bad when you reflect on that. Just one time, like I went back to my college due to like picking up my result and everything. So I was just sitting in the waiting area. फिर वहाँ पे मेरी एक पुरानी टीचर आई and she was discussing with the toilet pointer वाले जो है ना उनके साथ मतलब she was discussing that what rate should be for this and that, and she wanted to buy pens for herself and for the classroom use. Even that she had to buy from her salary, and she wasn't Wow. like being paid extra for buying the stationery that she has to use in the college for teaching the students. I mean, यार अब इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो मतलब this is just really really low. आप एक तो उनको already you paying peanuts, फिर आप ये भी expect करते हो कि वो अपनी सैलरी में से देशी खरीदे तो उनका घर, उनके बच्चे and bills that they have to pay, उन सब का क्या होता होगा I cannot even imagine. Yeah, I can imagine. Right. Ek jo question, as a slight change of topic, that came up in one of our previous episodes was this, and I thought it would be good to discuss this actually. Do you think that your school life today, like हमारी जो आज की school life है बच्चों में, it's more difficult than the school life that your parents had? Do you have more exam stress? Do you have more, school stress in general than your parents did? Or are the curriculums more challenging today? What do you guys think about that? Yeah, personally, I feel it might not be like academically challenging, but it's more socially ज़्यादा challenging हो गया because like our parents or peers they always compare कि भाई यार इसके तो अच्छे grades आ रहे हैं आप लोग फिर भी ऐसे वैसे बैठे हो ये वो ठीक है. It's become like a challenge. It's become like a race कि भाई इसको कौन ज़्यादा grades ला सकता है. That's what I experienced like all my college life. कि यार आप कितने grades ला रहे हो आपका क्या है, because that's essentially what you were measured upon ना, what you were compared to. उसके अलावा तो फिर like academically I feel कि हमने Cambridge का वो system पढ़ा था तो it was okay, but I felt like it was more कि भाई जो लिखा है वही लिखो and that's what you will get, that's what will get you scores. It didn't exactly promote creative thinking because I remember we went to a parent teacher meeting and my economics teacher, she said कि देखे ये मास बड़ा ज़हीन बच्चा है मगर ये आंसर्स अपने लिखता है जो किताब में है वो नहीं लिखता इसलिए इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते. I stared at her. I'm like, man, is that what we're being measured upon? कि how you write, how you copy an answer, rather than what your understanding is of an answer. Yeah, right. So critical thinking promote नहीं की जा रही. At least जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, but in Scotland it's in the British system it's completely the opposite. तो university level अलग है. तो उस पर हमने खास बाद में बात करेंगे. I mean, in one way that I think maybe it could be more challenging today than it used to be for our parents, maybe, is वो social वाली बात हमारी ठीक है. दूसरी बात, I think it's just gotten more competitive. There's a lot more visibility into what others are doing. यार मैं तुम्हें बताऊं इधर क्या कहते हैं, there's बाकायदा billboards लगे होते हैं सारे बच्चों की तस्वीरों के जिन के A's आए, ठीक है, नाम और तस्वीर. I'm sure everyone will agree on this. Really? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, लगे होते हैं billboards. अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं होता, but that's very interesting. Of course, man. वहाँ पे क्यों? इधर तो the poster childs. I mean, tuition centers के बाहर लगे हुए होते हैं literally इस बच्चे का AI है, इस बच्चे का आ रहा है. स्कूल के बाहर. हाँ, उनको तो इतना गंदा डिकेट किया जाता है ना, बेचारे पड़े होते हैं. लेकिन failing students का लिखा होता है नाम, like इनको F मिला है, or is it just the A's? Just the A's. Okay, चलो इतना रहम तो कर गए. Yeah. I want to share something. हाँ, बोलो. I didn't want to study science and I was pressurized कि science ही पढ़नी है, इसका ही scope है and इसके अलावा कुछ नहीं है. तो my teacher was like कि बेटा अगर आपने science ली, अगर आपकी supplementary सीन हो जाता है, अगर आप पास नहीं होते हो science में तो फिर याद रखना कि कभी आपका मैट्रिक क्लियर नहीं होगा, आप हमेशा के लिए वो स्टैम्प रह जाएगी आप पे कि आप
मतलब what में you failed and all. ठीक है, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इस बात के लिए किया कि मैं ना साइंस पढ़ूँ, मैं ड्रॉप कर दूँ और मुझे घर वालों से इतना ज़्यादा हो रहा था कि जी अब बेटा पढ़ना है तो साइंस पढ़ना है, वरना ये क्या फ़ायदा, पढ़ने का क्या फ़ायदा। मैं वाज सो कंफ्यूज कि मैंने किसकी सुननी है, मैंने घर वालों की सुननी है या जो टीचर मुझे पढ़ा रही है मैंने उनकी सुननी है। बट देन आई चेंज माई स्कूल और मैंने साइंस ही पढ़ी। ये और बात है कि रो के पढ़ी पर पढ़ी और मैं फेल नहीं हुई। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहली बात है कि फेल हो के फेलियर को फेस करना नहीं सिखाते हैं। टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और उनकी लर्निंग स्किल्स पर काम करें और उनके जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें गाइड करें कि कैसे वो अपने स्कोर्स बेटर कर सकते हैं, कैसे वो अपने फेलियर से सीख सकते हैं, ना कि उनको डराएं कि इस सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं कर सकते या इस सब्जेक्ट में आप रह जाओगे या ये चीज़ सही नहीं है। और अर्ली स्टेजेस से स्टूडेंट्स को फेलियर फेस करना या उसे एक्सेप्ट करना सिखाना चाहिए कि चलो इस दफ़ा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो हमेशा सबके ए ग्रेड्स और सबके अच्छे मार्क्स तो नहीं आ सकते हैं ना। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी यहाँ पे वो एलिमेंट नहीं है अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करने का और इस चीज़ को मानने का कि चलो इस दफ़ा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि सब सीखें और ये चीज़ सिखाई जाए अर्ली स्टेजेस पे, स्पेशली स्कूल लेवल। तो या जहाँ तक एकेडमिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी स्टडीज डिफिकल्ट हो गई है या नहीं, आई वुड से Yeah. बिकॉज थिंग इज कि हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने में जॉब मिल जाती थी हमें बैचलर्स तक। अब यहाँ पे फॉर अ गुड पेइंग जॉब यू नीड टू हैव अ मास्टर्स एज वेल, मतलब कंपलसरी बना दिया। Yeah, right. And if you That is don't have true. a master's, then आपकी पे बहुत लो होती है या फिर आपको जॉब मिल ही नहीं पाती। The standard is masters. Even over here, actually, the standard is to have a master's degree. फिर सोशली भी अगर देखा जाए तो फिर क्या बोलते हैं, सिर्फ जॉब इंटरव्यूज में आप क्या बोलते हैं मास्टर्स वाले एप्लीकेंट्स को नहीं ये सिर्फ दिया जाता। अगर आप सोशली भी देखो अपने क्या बोलते हैं खानदानों में, और इफ यू लाइक एट पार्टी और एनीथिंग जिसने मास्टर्स किया हुआ तो उसको लोग बहुत ज्यादा समझते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। और जिसने अगर सिर्फ बैचलर्स करा होता है उसको बोलता है अरे यार तुम भी मास्टर्स कर लो ना। ये नहीं रियलाइज करते कि यार अभी उसके पास या तो उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो मास्टर्स को क्या बोलते हैं परस्यू कर पाए, या उसकी ऐसी मेंटल हेल्थ हालत नहीं है कि वो मास्टर्स परस्यू कर पाए। They don't realize other factors that actually lead to study further. Yeah, that's true. You know, one thing I like about living in the US is over here, I mean, it is changing. The standard is changing that most people are expected to have a master's degree to progress, but you don't really need it. For example, I have a bachelor's degree. मेरे पास master's नहीं है. I have a bachelor's degree, but I made it so far. Or alhamdulillah, you know, my salary is really good. I got promotions. I've been able to switch into different roles and moved up quite a bit That's over the really last good. 7 years. Yeah, that I've been working. And in fact, I've actually met people who made the mistake of going directly for masters right after their bachelor's degree. जो यहाँ पे mistake समझी जाती है for many majors, because after you have a master's degree and if you don't have working experience in a real job, companies they don't find a good role for you because they're like, okay, you're overqualified in terms of academics, but in terms of actual work experience, you don't have any. Underqualified. Exactly. Yeah. So I know many people, I've ran into many people who had a master's degree and they make less money than me. And they're being treated like junior analysts, junior engineers and whatnot. और मैं उनको सिखा रहा हूँ बल्कि. So in fact, the master's degree here can be a disadvantage depending on the timing of when you get it. Most of the people's expectations are you'll get a master's degree after about 4 or 5 years of working for the type of field that I work in, at least engineering, business, or computer science. So that's really interesting. You can still get really far here with a bachelor's degree. And for example, my manager, he still has a bachelor's degree and he's an associate director. So he's very high up. So like it's not a death sentence here. लेकिन हाँ, ये मैंने गौर किया देसी कल्चर में, I mean वैसे ही बातों में लोग पूछते हैं आपने मास्टर्स किया है, बैचलर्स और अगर बैचलर्स का बोलो तो बेटा आप मास्टर्स कर लो, something like that. That happens here too. और ये भी है अगर मास्टर्स करा हुआ है तो मास्टर्स को भी क्या बोलते हैं इतना खास अब नहीं समझा जा रहा है। मतलब पीएचडी को करा हुआ है तो वो तो महान है। और पीएचडी का ये लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं दैट यू नीड टू हैव out of the box kind of idea in order to pursue PhD, because you have to come up with something that is not being developed yet in our fast growing
technological. You need to do The an original industrial research or revolution. something, right? You need to like Exactly. yeah. एंड मतलब जैसे कि Right. बोलते हैं अगर आप देखा जाए तो पीएचडी का अब वैसे तो इतना स्कोप है भी नहीं Mhm. बिकॉज जिस रेट पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है आई डोंट थिंक यू कैन लाइक रियली कम अप विद अ सर्टेन इंजीनियस ओरिजिनल आइडिया एंड परस्यू पीएचडी Well, it's hard, yeah. That's why I think that explains a lot of the research articles I find online sometimes, and I'm like, यार इसके बारे में सोचता भी कौन है? Why did this guy pursue this topic? It's like something really weird, like very, very granular, very specific type of thing. Some guy decides to pursue it and writes a book about it. Mhm. Yeah, I'm trying to see if I can find something here. Yeah, here you go. 30 of the most bizarre research papers of all time. Oh Lord, that does exist. Yeah, I'm going to read some of these out. Number 1, wet underwear, not comfortable. Somebody actually did research on this. Yeah. Here's another one. Look at this. Do woodpeckers get headaches? Woodpeckers get headaches. क्या Oh my उनको God. सर दर्द होती है कि नहीं? Oh my God, this feels like वो नहीं होता रात के 2-3 बजे Seriously? ऐसे होते हैं दौड़ जो हाँ. हाँ भाई पेपर Shower complete thoughts. करना है. Oh my Yeah. God. The unhidden dangers of sword swallowing. You know वो magicians जो तलवार अपने मुंह में डाल देते हैं. This guy. That's an illusion. That's a big illusion. Like they don't do it literally. What? I don't know. कुछ लोग करते होंगे. I don't know. Yeah. You know, illusions होती हैं, लेकिन I think some people actually do it too. I don't know how. I mean, a lot of people have that. Obviously, it's a real thing, huh? Here's another interesting one. Even chickens prefer beautiful people. They did a whole research about how chickens are reacting to people's faces. Oh my God. And I guess chickens, they respond to, let's see what it says here. The study saw 6 chickens trained to react to images of ordinary male or female face. They were then tested on a series of images. Perhaps surprisingly, the chickens showed preferences for faces consistent with human sexual preferences. ये पीएचडी के रिसर्चेस हैं. These are actual published research papers. So yeah, Brilliant. वैसे लोग करते हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं. हमारी एक Yeah. बहुत सीनियर थी. हमारी टीचर ने बताया था कि सोच समझ के बेटा थीसिस के लिए टॉपिक चूज करें, क्योंकि एक दफा एक लड़की जो थी, मतलब मैं क्योंकि ऑल गर्ल्स में पढ़ी हूँ, तो वो बहुत ज्यादा कह लो जिद पे थी कि मुझे 50 शेड्स ऑफ ग्रे पे ही थीसिस करना है. Oh my और God. उसे सबने समझाया कि अगर कोई आ गया, कोई मौलवी टाइप अगर आपको बाइवा लेने आ गया, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे सारा कुछ. वो मान ही नहीं रही थी और उसने किया इसीलिए. Wow. और सब उसको मना कर रहे थे, क्योंकि जितना मर्जी आप लिटरेचर टीचर्स हो या जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान में ही हो, और वो मतलब मना करते हैं कि आप ऐसी उल्टी सीधी चीजें मत चूज करें, लेकिन उसने किया था 50 शेड्स पे. वैसे I imagine like that's the best thing you can do for a topic, because अगर आपका वाइवा हो रहा है, अगर आपसे कोई सवाल पूछे, क्या पूछेंगे भाई? पूछेंगे ये बेस्ट है. मैंने ये तो कहा था कि वो पूछेंगे क्या. Yeah, वो क्या I know everything there is to know. What literary value did you find in chapter 3? Yeah. Billiard table. थी प्रोफेसर नहीं थी. शी वाज यंग, इतनी मतलब नहीं होंगी वो. तो वो ऑफेंड हो गई थी कि आप पाकिस्तान में रह के आप प्रोस्टिट्यूशन को कैसे डिफेंड कर सकते हैं. एक बच्ची का था और 11 नंबर उसका है, तो वो ऑफेंड हो गई थी बहुत ज्यादा. और वो 1 घंटा बाहर ही नहीं आए दोनों. ना वो आई एक्सटर्नल बाहर आई, ना वो बच्ची बाहर आई. और वो लड़ते रहे और वो रोती भी बाहर निकली, क्योंकि वो असल में गुस्सा निकाल के सर आई थी. वो परेशान होकर नहीं रोई थी, वो अच्छी खासी माँ बहन करके बाहर निकली थी कि कैसे मैं साइड नहीं ले सकती उसकी एंड ऑल. तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में रहते हो, कैसे आप डिफेंड कर सकते हो इस चीज को. इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि आपको जब आप लिटरेचर पढ़ते हो, पहले वो आपको खुद कहते हैं ना कि यू हैव ब्रॉडर कैनवस, यू कैन थिंक एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग. और जब बच्चे लिख देते हैं तो उसके बाद इश्यू बन जाते हैं. इस बात पे वो शहजाद रॉय का एक गाने का लिरिक ही हो जाए कि यहाँ पे बोलने से पहले आजादी, लेकिन बोलने के बाद आजादी नहीं है. Well, that's what the whole world is turning into now. अब यहाँ पे in the US, you could have written that paper and gotten away with it. Nobody cares about that, right? But there are other things you can say which are absolutely legal for you to say. But उसके बाद जो repercussions होंगे, the reactions to that, nobody's going to be able to protect you from that, you know? You're going to have to face it. So freedom of speech, I think anywhere is an illusion. I don't think it's, you really have the absolute freedom to say what you want or express yourself. Yeah, I mean, टीचर पे बहुत वाकई like atmosphere पे बहुत डिपेंड करता है. मुझे याद है one time I overslept for a exam for my statistics class.
in college, right? मेरे ख्याल में आधा घंटा गुजर गया तो मैं उठा and I woke up. I was like, oh no! मैंने time check किया. मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो. Like this is the first time I was gonna miss an exam. मैंने teacher को email लिखा. मैंने कोई कहानी बना दी. The obvious answer, the honest answer was I just overslept. I couldn't wake up, right? लेकिन मैंने पूरी कहानी बनाई. मेरे पता नहीं ये कौन बीमार हैं. मेरी अम्मी उनको पाकिस्तान गई हैं उनको उनका ख्याल रखने के लिए. And I went to drop my mom off at the airport, and then I got back very late last night. I sent this whole sob story. And फिर मैंने simultaneously, right after I sent the email, right, I drove over to college and I went into the class. I showed up in the last like 15 minutes. I still thought, I could do it, right? And I went in there, and the teacher he was like this Indian guy and very understanding. I don't know if he had seen my email or not, but he gave me the exam and he let me finish. He actually stayed in the class for 10 more minutes. After the time had officially finished off, and he let me finish it. I handed that in, and guess what I got? I got like 105 because I was also able to answer the bonus question. And I got like, and the teacher didn't even like respond back to the email. But the next time I came in after the exam, he was like, how's your relative doing? I was like, oh yeah, everything's fine. मुझे स्टोरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी. वो बंदा इतना अंडरस्टैंडिंग था क्योंकि उसको पता था कि I was actually a pretty good student. I was engaged in the class. I used to ask questions. I used to be very focused. Or he saw that, and he knows that I don't have a reason to skip the exam. मैं क्या 8 बजे सुबह के मैं क्या फलूदा खाने जा रहा हूँ? Obviously, there's a reason I missed the exam. So वो टीचर पे बहुत डिपेंड करता है. टीचर पे और एनवायरनमेंट पे, I guess. यार मैं अपने टीचर्स का बताऊं. मेरे जो टीचर्स थी, हमारी एक होती थी मैथ्स की टीचर, ठीक है, एंड शी वाज वेरी फेमस. शी वाज लाइक वेरी रूथलेस. लोग बच्चों को टेबल पे लिटा के उनको मारती थी, ठीक है. दिस डिड एक्चुअली हैपन क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. हमने खुद देखा है. शी स्टिल रन्स एंड आई बिलीव इट्स इन स्कीम 3 समवेयर. शी स्टिल रन्स एन अकेडमी, ठीक है. वो शी churns आउट बेसिकली ग्रेड्स वगैरह वगैरह. तो हम लोग बैठे थे क्लास में, ठीक है. एग्जाम सीजन था. वो एग्जाम सीजन में ये होता है ना कि ऐसा ऐसा बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं. सब घर में बैठ के पढ़ना शुरू हो जाता है. रिवीजन क्लासेस शुरू होती थी बेसिकली. सिलेबस जब खत्म हो जाता है, रिवीजन क्लासेस. मैं 1 महीना गया था अपना ट्यूशन सेंटर. लेकिन उसके बाद आई फेल्ट रियली अनकंफर्टेबल. मैं वापस आ गया. मैं फिर क्लास में बैठा था, ठीक है. अब क्लास घंटे की होती है ज़्यादा से ज़्यादा. हम बैठे पढ़. अब मिस बता रही है ये प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है. ऐसे कहती हैं वैसे इसको सॉल्व करने का एक डिफरेंट तरीका है. एकेडमी आओ, मैं तुम्हें समझा दूंगी सारा. एंड आई लाइक मैं शॉक हो गया था. एंड इवन एज अ किड आई फेल्ट दैट दिस वाज सो रॉन्ग. दिस वाज लाइक नॉट द जॉब ऑफ अ टीचर कि भाई तुम एकेडमी आ जाओ मेरे, ठीक है. बाकी मैं वहाँ पे पढ़ा दूंगी. भाई ये तो स्कूल क्यों आ रही हो अगर पढ़ाना ही नहीं है आपको, ठीक है. एंड आई फेल्ट शॉक्ड. एंड ये होता है, अभी भी होता है. एंड अकेडमीज में तो फिल्म माफ ही करें, वहाँ पे तो लाइक पूरी फैक्ट्रीज है ना ग्रेड्स निकालने की. दिस वाज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ था. I mean, if a teacher, like some teachers who give students a helping hand, उनका सिर्फ confidence boost नहीं होता, उनकी एक drive भी boost हो जाती है कि yeah man, I want to do better. I want to do better. I want to go ahead. मैं teacher को especially please करने के लिए I can go out of my way. Absolutely. Personality पे बहुत depend करता है, and I don't know who's failing the teachers when they, subsequently like give their students a hard time. Are they not being trained properly? या उनका maybe they shouldn't have even gone to like, academic that route of teaching. Maybe they weren't the right fit for it. Not everybody can teach. हर बंदे के पास इतनी patience भी नहीं होती. You can see that on some of the teachers' personalities. I think there should be like just not training for teachers. There should be like a psychological evaluation as well for them, whether they are capable of teaching or not, because obviously it requires some psychological level in order to like come to the level of your students and make them teach something which but they don't know. Right. So उस level पे आने के लिए भी there should be like a test or something like that. Maybe like psychological training भी होनी चाहिए rather than just like relying upon the physical training itself. Mm-hmm. Yeah, absolutely. Yeah. I mean, एक बार when I was taking algebra in high school मुझे algebra, हालांकि I was really good at math, मुझे कभी समझ नहीं आया algebra का मकसद क्या है when I was first learning it. And the teacher
Like there were other kids asking the teacher, "ये x क्या होता है? Like what is 5x is equal to 10?" I know how to solve it, but I don't know what the x even means. So the teacher was just like, "That's just how it is. You just have to learn it. That's just how it is, you know." Yeah. And then I switched schools that year. We moved to a different town, and I retook that class because I was like, honestly, I didn't understand what the hell was going on. And they put me in that class again. And this time, the teacher put it in real world scenarios that really helped understand why we use algebra, why algebra makes sense. So 5x is equal to 10 could be like, like you bought a total like $10 worth of apples and you bought 5 apples. How much was each apple worth? Like a real life, basic, simple scenario. And you could solve that and say, okay, each apple costs $2 each, and you bought 5 of those. That's equal to 10. Now algebra makes a lot of sense. That's So that really helped. But teacher पे फर्क वो teacher इतना simple सा जवाब नहीं दे सकती. What does x mean? She just kept saying x is a variable, Oh, Lord. and you don't have the patience for it. You're just in the wrong field. You don't belong. That also explains like उनको खुद फिर concept ही नहीं पता ना जो वो explain करना चाह रहे हैं. Unless you know it yourself, you can't teach it to Yeah. others. You just like make excuses. Yeah, variable. You're not exactly sure. Just give us a real world example. ये बात बिल्कुल सही किया. Finally, around this time, we talked more about how student life or school life might have an impact around studying or the success of the students. Brett, remember you did an episode with Arinda. Yeah. So I think she also described like really restrictive environment in the university. Okay, I think हमें एक बार अंदर घुस जाओ तो बाहर नहीं निकलने देते थे. जी बिल्कुल. मतलब कि what kind of environment putting Yeah, students exactly. मतलब क्या Well, उनको yeah. क्या prison में डाल रहे हो basically. I was shocked. अगर हम एंटर हो रहे हैं तो हम लोग, अगर आप वो ऑफ टाइमिंग्स की बात कर रहे हो तो हम लोग 2 बजे से पहले बाहर नहीं निकल सकते. 2 PM is the time. Even Yeah. on Fridays. फ्राइडे को जुमे को लोग 12 बजे घर जाते हैं, हम 2:30 बजे घर जाते हैं. Wow. After 2 p.m., you cannot leave. Yeah. That's like most of the day you're basically stuck. और उससे भी बुरी बात ये है कि अगर किसी के घर से भाई रहने आ जाता है तो वो आपको भाई को भाई नहीं मानते हैं. उसने कहा ये तो भाई है ही नहीं, इसकी शक्ल देखें भाई नहीं है, तो उनके आईडी कार्ड मैच किए, भाई नहीं. और उसका भाई, अब भी वो आप किसी के भाई के बारे में बात करे, उसका भाई इतना एग्रेसिव हो रहा था. उसका भाई कहते क्या बकवास है ये. और फिर उन्होंने कंफर्म किया और फिर आखिरकार वो घर गई. और ये भी जो घर जाने वाला सीन है, इवन आपके मामा बाबा आ रहे हैं, तो उनको भी 1 घंटे का प्रोसेस है. कोई 10 जगह से सिग्नेचर होते हैं, फिर आप घर से बाहर जाते हो. उतनी देर में चाहे किसी को इमरजेंसी है, कोई फौत हो रहा है, हो जाए, उनको परवाह नहीं है. यार इससे बेहतर तो हमारा ये डिफेंस का डिग्री कॉलेज है. हमारे जो गार्ड्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई इस बच्ची की ये गाड़ी, उस बच्ची की ये गाड़ी है. नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट ही इतना ज्यादा है, किस किस को नोट करेंगे. एंड तक हो जाता है, एंड तक पता लग जाता है उनको. 8 सेमेस्टर तक उनको याद रहता है. नहीं, यहाँ पे कोई सीन नहीं. ये तो बड़ी नहीं, अच्छी लेकिन बात. इनका बहुत बुरा सीन है. इनका तो इतना ही पूछो. आपको तो ड्रेसिंग से भी मसला है. आप ऑल गर्ल्स में पढ़ते हो, फिर भी ड्रेसिंग से भी मसला है. ये पंचे इतने इंच आपके होने चाहिए वरना आपको एंट्री की इजाजत नहीं इसके भी है. आप टाइट्स नहीं पहन सकते, आप पैंट्स नहीं पहन सकते, ऐसे पहन सकती हैं. बिकॉज को सब लोग सब कुछ पहनते हैं. दे डोंट इवन केयर कि कोई क्या कमेंट करे. इवन इनको मैनेजमेंट को छोड़ो, आपके जो वैसे फेलो यूनिवर्सिटी फेलोज होते हैं, जो कि आपको जानते भी नहीं है, अबाई वालियां आपको जो कमेंट पास करती हैं, वो तो क्या कोई लड़का पास करता होगा किसी को. मतलब अबाई वालियां, सो कॉल्ड गर्ल्स, वो भी जो कमेंट पास कर रही होती है ना, तो समझ नहीं आ रही होती है कि इन बाजी को क्या कहना. जब आप अबाया ले रहे हो, दैट्स योर चॉइस. कोई कुछ कर रहा है, वो उनकी, लेकिन वो पीछे तक आएंगी आपके पीछे 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 कमेंट पास करने के लिए. बहुत कुछ होता है. फिर वो घर वालों की तो सिटी होती है ना. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बेस्ट होते हैं. यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रही हूँ, स्कूल लेवल की नहीं. वो प्राइवेट ही आई गेस स्कूल की समझ आती है. स्कूल की समझ आती है because your children you need to be taken care of, whereas in university you're an adult, मतलब you can take care of yourself. लेकिन यूनिवर्सिटीज में भी अब बच्चों की तरह बच्चों से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा है. भाई आपको आपकी चॉइस मैटर नहीं करती. आपकी चॉइस ही मैटर नहीं करती. बॉयज का यार कोई, I'll be very frank, बॉयज को कोई नहीं रोकता. एंड हमारे कल्चर में है आप कहीं भी उठ के चले जाओ, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है. whereas गर्ल्स को बहुत सख्ती है. यहाँ पे तो अगर आप ब्रिज क्रॉस कर रहे हो ना, यूनिवर्सिटी ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, लड़कियों का प्लान होता था गेट तक जाना ही नहीं है. आप लोग आओगे, उस पे ब्रिज पे खड़े हो, सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, कहीं प्लान करें, कहीं जा रहे हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसपे कि वो लेडी गार्ड्स भेजते हैं
कि जो भी ब्रिज पे खड़े हैं इनको ब्रिज से पकड़ के जाओ। मतलब वहां से भी पकड़ेंगे, घर से आगे लेने वाला हिसाब है कि घर से पिक एंड ड्रॉप दे देंगे वो आप। बहुत ही फारिग है बस। कसम से। और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो पकड़े जाते हैं, जिन्होंने करना होता है वो करके कहीं से कहीं पहुंचे। वही ना, मतलब कि आप वो यार देखो सीधी बात है ना, लाइक आई यूज्ड टू डिबेट विद माय मदर ऑन दिस एंड अ लॉट ऑफ लाइक कंजर्वेटिव लोगों से मैं सही टकराता था इस बात पे। मैं कहा, अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं नाइट क्लब खोलता हूँ कहीं इस्लामाबाद में, कौन जाएगा? वो यही कहते हैं कि भाई सब जाएंगे। मैं कहा नहीं, सब नहीं जाएंगे। जिनको अपनी इज्जत प्यारी वो घर पे ही रहेंगे, जिन्होंने ऐसा की हरकतें जाके करनी है वो चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई जानने वाला जाएगा, भाई वो उसकी ज़ाती वो डिसीजन है ना, आप तो उसको फोर्स नहीं कर रहे ना, कोई और उसको फोर्स तो नहीं कर रहा, वो खुद ही जा रहा है। तो ये फिर इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर आ जाती है कि आप जो करें। ठीक है, वो होता है कि भाई आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, लेकिन अगर आपकी अपब्रिंगिंग आपको वहाँ तक लेके जा रही है, सो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम देन। लेकिन सब सारा बुरा नहीं था, सारा बुरा नहीं था। मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के कुछ बहुत फनी अच्छे Yeah. मोमेंट्स भी थे, क्योंकि हमने तो एंजॉय किया, चाहे हमें कोई रोक रहा था। Hmm. हमने तो किया जो करना था, हमने सब कुछ किया। कॉस्प्ले, थीम, स्लीप ओवर, स्लम्बर पार्टी, सारा कुछ जो हम कर सकते थे अपने फ्री डेज में हमने किया। Oh, good. ना फ्रीडम में आप अपनी वो करो, whatever you can do you should do in university, and I regret not doing a lot of things like parties, Halloween parties पे हम लोग नहीं गए। क्या ये वहाँ पे बताऊँ मसला क्या है? Hmm. यूके में मतलब अगर आप गुरुओं के साथ पढ़ रहे हो, they drink so much। मतलब मैं I went Hmm. to, I remember IT club में गया, कहते हैं let's go out for drinks। Okay, bye। रॉक क्लब में गया, they're like okay let's go out for drinks, bye। Yeah. मतलब Right. कि यार ड्रिंकिंग के उनके लिए अलावा तो कुछ भी नहीं है. Yeah, सोशल exactly. एक्टिविटी नहीं है ना। Yeah, it's the same over here, to be honest. और मैं जो सी यूनिवर्सिटी पे गया, that was like kind of really out there, really in the middle of nowhere. There was nothing else to do in the town. Like just basically it was a farmland type of area. And so students used to just get drunk over the weekends and have parties and stuff. So मैं हर weekend घर ही चला जाता था to spend time with my family because I didn't know what else to do. और कुछ parties वगैरह पे गया भी. I went to like Halloween parties and stuff. लेकिन कभी मैंने कभी enjoy नहीं किया. I've never really. You feel like the old one out essentially। Yeah, you can't be crazy like them without. We know। हर बंदे पे भी depend करता है. I guess there were a lot of Pakistani kids over here who did used to party and drink and everything. They loved it, and I never really saw the appeal in that lifestyle. So thankfully, I don't think I ever wanted to get involved too much in it. वो इधर भी लोग कर लेते हैं। हाँ, अब तो पाकिस्तान भी सारा कुछ चलता है. From my understanding. Awesome. Good Well, thank you guys. night. Yeah, good night for you. That's it. Love.